Okay, welcome to the class to all of you. And today we're going to talk about another type of question, and that is called summary completion. Completion task is almost the same, is the same. Uh, Completion like note completion, sentence completion, table completion, and then summary completion, flowchart completion, diagram. There's a bit of difference. If you remember, tab note completion, we studied that in note completion type of question, uh, the point clear, what helps you to understand and to solve the questions easily. There was subheadings. Then in table completion, then we talked yesterday that you need to deal the columns and rows. But today we want to talk about another type of question, and that is called summary completion. Okay. Most of the time, students that think that summary completion, the summary might be for the whole passage. For example, look, this is a passage. The entire one, we call it passage. Then in a single passage, you may have different paragraphs. The way we have paragraph one, this is paragraph one, and then paragraph two, paragraph three, paragraph four. So these are paragraphs. And the entire one, we call it what? Passage. So sometimes students that think that summary completion, when they hear clear, they see that, okay, summary completion type of question. So what they start thinking that the summary, it might be for the whole passage. No, that's not right. That's not true. In fact, summary completion is for either it comes from one paragraph or maximum two paragraphs. For example, over here, we have got two paragraphs summary. Can you see? This is the first paragraph, and then we have the second paragraph. So it seems like, we will complete it in two paragraphs, not in one paragraph. If that used to be a single paragraph, like both of them, like it, if अगर ये एक पैराग्राफ से आता तो फिर then we used to like search the answers in a single paragraph. But यहाँ पे आप summary में देखें कि यहाँ पे दो paragraphs है. If we have two paragraphs, then it means that we may have our answers in two paragraphs in the passage as well. Suppose if I find the first paragraph that's A, so the next paragraph that can be B. Okay, so they answers depend on one, clear. They depend on each other. Uh, so summary completion type of question, you may have two different types of questions in summary. Number one, without options. The one you can see, this is without options. Summary completion without options. This one. Straight away, these are blanks, and then you can search the correct option, the word, and then you can write here what is the right answer. But with options means this is without, and the second one is with options. Now, what I mean with options, you will be given a list. You will be given a list of options, and then you are supposed to like pick a word, and then you may match clear with the blanks. We will study this one, inshallah, by tomorrow. But today, our topic is without options. Summary completion, keep in your mind, we may have clear two types of summary completion, and depends on your luck. Either you have without option, the first one, or you may have with options. And we will study, inshallah, both of them, the first option as well as the second option. Summary completion type of questions are the most important type of questions. You will have them in exam. Okay. So first of all, you need to note down the words limit. And after that, the second point is look at the first part. And what is that? That is about your title. Can you see? This is the title. Because title helps you identify the correct paragraph. Most of the time, you may have summary completion type of questions either from the first two paragraphs or from the last two paragraphs of the passage. First two paragraphs or last two paragraphs. But I say most of the time, not always. Most of the time, your summary completion, it comes from the first two paragraphs of the passage or the last two paragraphs of the passage. Then what we can do, sometimes like, your title,
Title helps you to identify the correct paragraph. For summary completion type of question, the most important part is what? That is to identify the correct paragraph. Because if you're looking your answers in the wrong paragraph, so you will just only simply waste your time. So what helps me identify the correct paragraph? Number one, you may take help from the title, this one. And number two, just read the first two lines. For example, can you see city rooftops? You may find out some of the signposting words, some signposting words like words they cannot change. Words you believe that examiner can use both in summary and in the passage the same. Like if you go to the passage or if you want to search here, both are what? Both are same. So they are your signposting words, not the keywords, because keywords can be chain. Like, can you see greenery? So greenery is my signposting word. And then it talks about what? Initially, even like it talks about uh, green clear roofs and that city rooftops covered with greenery. That's greenery is your signposting word, and it has many advantages. They can even use benefits. So we are looking for a paragraph that talks about clear city rooftops covered with greenery have many, and that's related to benefits, advantages, not disadvantages. So before reading and focusing the questions, what comes in the option, we are supposed to look the exact location in the passage. So let's start reading quickly. Okay, what happened? I don't know which test was that. Let me click. Okay, here it is. Uh, let's start reading the the paragraph number one. Read paragraph number one, and do you think like what the question is advantages of green roofs? So do you think the paragraph number one is about advantages of green roofs? Start reading. Rooftops, yes, covered with grass. So grass is greenery. That's good. We can understand. Like what? They have mentioned what? Vegetable gardens, and this is how they have given you the names. Can you see? In many cities around the world. So most of the part has already matched. Am I right? So it means that the paragraph, our answers might be in the first paragraph now. We understood that rooftops with grass. With grass means what? Greenery. Because they have clearly mentioned here city rooftops covered with greenery. So covered with greenery means what? Covered with grass. Have many advantages. Clear? So now we want to talk about that the question, what they ask, these include listening what? The likelihood that floods will occur. The first part. Reducing negative. It talks about the negative. Reducing how much. It talks about the decreasing point. How much money is spent on. Money is spent on. And there are 2 points. And can you see and? And then we can say creating environments. So we can apply 2 points here. Point number one, if you remember, we have already studied that option number one, if you look here, so parallel structure applies here, parallel. We have already studied that. And the second point is this blank, Claire, if you start reading the words before the blank, collocations. So that can also help you to identify the answer, the correct answer. Now, reducing how much money is spent on what? But how much money is spent? But they have mentioned what? Reducing. Now we want to move to the passage, to the paragraph, and we want to start reading that. Can you match the exact words, what I highlighted there from the paragraph, please? What do you think if you start reading that?
Can you identify the answer in the paragraph, please? Sir, spent on is investing. Okay, great. Spent green top, green roof. सर रूफटॉप टॉप सर एडवांटेजेस की जगह हमें यहाँ पे बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं among the Okay. benefits तो Try to match exact words, reducing how much money is spent on. एनर्जी Reducing. सर Yes, Energy please. cost. Okay. एनर्जी Okay. How many words are required? Only one. If you only one word is required. Okay. Word Energy. limit is only one. Yeah. Energy. What is that? Energy. Yeah. Energy. Energy. Okay, Satara. If that's energy, how can you say that's Yes. energy? How? Saving on energy cost, and they are saying reducing how much money. Like money is reduced, so saving money. Good. Okay. They have talked about many advantages, right? Then they talk about these. These include. What do you mean by these include? Pronoun these. Pronoun these refers to what? Advantages. Advantages. Excellent. So these advantages are what? Listening the likelihood that floods will occur. Number one. And then number two, can you see more and more private companies and city authorities are investing in what? In green roofs. Draw to their wide-ranging benefits. Can you see? Wide range benefits. So many benefits. Yes, sir. Among these benefits, among the benefits, can you see? Among the benefits. For that, among the benefits, they have written what? These include. So what are those includes? Are saving on energy cost. Energy Saving on cost. energy cost. So what do you think cost means what? Money spent, right? Look, money spent. Yes. Money Yes. spent means cost. Yes, sir. And then saving means what? Reducing. Am I right? Yes, sir. Reducing. So reducing, Claire, reducing what? Money spent on what? On energy. Saving on energy cost mean what? Money reducing. How much money is spent Reducing on what? On energy. Yes. So we can simply write down energy. And after that, number two, mitigating the risk of floods. But now, what do you think? Like, can you find words in the question as well for this? Mitigating the risk of flood. Can you make those likelihood words? that flood Listening. Can you see? Listening. What strategy they have applied there? इन लोगों ने जी यहां पे सवाल में जो वर्ड पहले दिए हुए लिसनिंग द रिस्क ऑफ फ्लड, हाँ, वो इन लोगों ने एनर्जी कॉस्ट के बाद दिया हुआ है। और सवाल में क्या किया हुआ है कि सवाल में आप लोगों को एनर्जी सेविंग जो कॉस्ट है वो बाद में मिला है और जो दैट ऑफ फ्लड वो पहले इन लोगों ने जिक्र किया हुआ है। कैन यू सी? सो दे हैव चेंज्ड व्हाट? दे हैव चेंज्ड द स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था ना चेंजिंग स्ट्रक्चर्स। तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया हुआ है? दे हैव सिंपली चेंज द स्ट्रक्चर। इन लोगों ने सबसे पहले यहां पे एनर्जी कॉस्ट, सेविंग ऑन एनर्जी कॉस्ट, और फिर इन लोगों ने क्या? रिस्क ऑफ फ्लड्स। यहां पे सवाल में क्या है? रिस्क ऑफ फ्लड पहले एंड देन सेविंग इन ऑन एनर्जी कॉस्ट दोबारा है। एंड फिर इसके बाद क्या है? एंड। कैन यू सी हियर? एंड। ये एंड थर्ड मतलब तीसरा, मतलब यहां पे कितने पॉइंट्स हो रहे? नंबर वन, पॉइंट नंबर वन इज व्हाट? Point number one is saving on energy cost. Number two, reducing risk of floods. And number third, and creating environments. Creating environments Making- that are suitable for what? For wildlife. इन लोगों ने क्या लिखा है? Making habitats making habitat for urban wildlife. wildlife और फिर इन लोगों ने क्या लिखा है इसके बाद? अब इसके बाद मतलब ये tackling it. यहां तक तो मतलब कंप्लीट हुआ ना? Am I right? कंप्लीट हुआ ना यहां तक? अब इसके बाद क्या है? Yes, sir. इन मेनी केसेस दे कैन ओल्सो। तो ओल्सो का मतलब क्या है? मतलब ये चौथा, ये कितने पॉइंट? 3 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हुए कि नहीं? नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? Yes, sir. दे कैन ओल्सो बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग dish,
तो अब ये चौथा नंबर है, चौथा पॉइंट है. सो वी आर लुकिंग फॉर द फोर्थ पॉइंट. So what do you think? What like you can you find the paraphrasing part for this one in the paragraph? Yes, sir. It's Okay, everyone produce should focus. Satara, आप लोग के पास for टाइम है, जल्दी करें प्लीज एवरीबडी. producing it, growing. Growing food and For producing food. growing Okay, food. Growing, sir. एक्सेलेंट. Growing. तो अब देखिए Growing food. कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है. Word formation. Words could change किया होगा. Synonym. No, word formation not. Synonym. Synonym, sir. सिनोनिम तो हर जगह पे होगा. दूसरा क्या है? Sir, verb plus Rearranging. Collocation है verb ना. plus noun. प्रोड्यूसिंग, फॉर Yes, sir. प्रोड्यूसिंग, जरन प्लस नाउन. क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? नाउन. तो Noun. ये प्रोड्यूसिंग Yes. वर्ड, क्या प्रोड्यूस Food. करना तो है, लेकिन क्या चीज? Food. कैन यू सी नाउ Noun. द कॉलोकेशन? रूल कौन से है? कॉलोकेशन, कॉलोकेशन एंड इवन. कैन यू सी एंड? कैन यू सी है एंड? इन लोगों ने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे? एंड. एंड इन लोगों ने क्या किया है? कैन ओसो. एम आई राइट? ओसो. इवन ग्रोइंग. ग्रोइंग आईएनजी है कि नहीं? जरंड है ना. तो जरंड के बाद नाउन. तो ग्रोइंग यहाँ पे सिनोनिम क्या है? व्हाट इज द सिनोनिम फॉर ग्रोइंग? प्रोड्यूसिंग. Producing. Producing and growing both are same. So that's why we can say the correct answer can be, what can be the right answer? Simply we can write down that can be food. Food. Yes, food Sir, can be the right answer. Yes, sir, please. लेकिन इसमें Food. कह रहे हैं कि टैकलिंग एयर पोल्यूशन. क्या तो सर इसका एयर पोल्यूशन तो उधर नहीं है सर. क्या नहीं है हमारे पास? सर इधर कह रहे हैं ना कि एयर पोल्यूशन, तो उधर Okay. तो उधर नहीं है सर. मतलब क्वेश्चन में तो इन यहाँ मैनी पे है केसेस ना दे बच्चे, कैन आल्सो बी यूज्ड and फॉर making, प्रोड्यूसिंग creating and creating environments. Creating environment. ये environment किस चीज से रिलेटेड है? एयर पोल्यूशन के साथ है ना. यस. टैकलिंग एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है? And creating environments that are suitable for wildlife. तो environment is what? तो tackling air pollution हुआ ना. समझ रहे हो? Hello? Yes, sir. Yeah, it talks about air pollution. So air pollution means what? Environments. Yes, sir. Yes. हाँ, तो यहाँ पे food आया. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे. Okay, Now sir. paragraph has changed, right? यहाँ पे full stop है. Am I right? And now this is the second paragraph. Am I right? Hello? Yes, sir. अब दूसरा पैराग्राफ है. तो इसका मतलब क्या है कि this part clear in the first paragraph. Now Yes, we sir. are This done. is the So we are going to talk about the next paragraph now. अब आपके जो जवाबात है वो दूसरे पैराग्राफ, क्योंकि ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ और ये पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. और यहाँ पे क्या लिख रहा है यार? दे आर ऑल्सो क्लियर, देयर आर ऑल्सो सोशल बेनिफिट्स. क्लियर, देयर आर ऑल्सो सोशल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रूफ्स. क्योंकि यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ ना. सोशल बेनिफिट्स है ना यहाँ पे. यू कैन टॉक टू मी. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टॉपिक चेंज हुआ. तो पैराग्राफ क्यों हम चेंज कर देते हैं? पैराग्राफ तब चेंज होगा जब आपका टॉपिक, जो मेन आइडिया, वो चेंज हो. क्योंकि यहाँ पे अब सोशल बेनिफिट्स है. तो सोशल बेनिफिट्स है, सो डेफिनेटली एक ही पैराग्राफ में तो दोनों नहीं लिख सकते. सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चेंज द पैराग्राफ. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम. डायरेक्टली यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. डू यू अंडरस्टैंड? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब Yes, यहां sir. पे देखिए व्हाट इट टॉक्स. फॉर एग्जांपल, द मेडिकल प्रोफेशन रिकमेंड्स. मेडिकल प्रोफेशन रिकमेंड्स. सो व्हाट इज इट रिकमेंड? अब देखिए कि मेडिकल, यहां पे मेडिकल प्रोफेशन से यहां पे इन लोगों का क्या हुआ है? कैन यू सी डॉक्टर्स? Yes, sir. ओके, Doctors. तो डॉक्टर्स आर मोर रिलेटेड टू व्हाट? मेडिकल प्रोफेशंस. Yes, sir. Yes, sir. Okay, what is the count? Done. Good. Don't let anyone about that. अरे सर कोई जाता पता नहीं मुझे तो सुनते. ठीक है. ओ ठुलो शुआगा.
Done that. Okay. So now what we have here, there are also social benefits of green roofs. For example, the medical profession recommends. तो medical professions का मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखिए मेरे, Prescribing. अच्छा मेरी बात सुने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सोशल वैल्यूज है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे सोशल बेनिफिट्स है ऑफ ग्रीन रूफ्स. डॉक्टर्स आर इंक्रीजिंगली प्रिस्क्राइब टाइमिंग क्लियर. अब यहाँ पे सवाल देखिए, the medical profession recommends DESH is an Prescribing. activity to help people cope with mental issues. Mental health. अच्छा अब Gardening, यहाँ पे sir. देखिए, यहाँ तक आप गार्डनिंग लोगों ने क्या है। करना है, मुझे ये बताइए कि कहाँ से कहाँ तक ये पैराफ्रेज हुआ है, जस्ट रीड करें, शाबाश. Sir, depression तक. डिप्रेशन, तो डिप्रेशन इज रिलेटेड विद व्हाट? मेंटल हेल्थ. Mental मेंटल health. हेल्थ इशू। एक्सेलेंट. अब यहाँ पे लोगों ने पेशेंट्स डीलिंग विद व्हाट? Anxiety and एंजाइटी depression. एंड डिप्रेशन। Excellent. So both of them are what? Dealing means people. अब patient से इन लोगों का क्या मतलब है? People. Cop Cope with means means dealing. what? Cope with means dealing with. Dealing. Mental health issues means what? Anxiety and depression. ठीक है ना? Depression. तो इसका मतलब है कि मेरा जवाब इससे पहले है, यहां पर होगा. Yes. Yes, sir. Am I right? Gardening. या तो आप Gardening. क्या मतलब प्रिस्क्राइब वो क्या recommend रिकमेंड के करना लिए। चाहते हैं? Time spent Gardening, sir. Gardening. हाँ, gardening. प्रिस्क्राइबिंग टाइम स्पेंट. तो Yes. ये डॉक्टर्स आर इंक्रीजिंगली प्रिस्क्राइबिंग टाइम स्पेंट Yes. ऑन व्हाट? ऑन गार्डनिंग. And gardening. यस, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड है वो एक है, सो आई कांट राइट आउटडोर. क्लियर? Yes. यस सर। सो एग्जैक्टली आई कैन से गार्डनिंग. Yes, sir. बी केयरफुल विद द स्पेलिंग्स. अब अच्छा, ये मतलब जो दूसरा जवाब है, सो एंड रिसर्च यहाँ पे रिसर्च लिखा है, इन लोगों ने क्या लिखा है? स्टडीज. स्टडीज। एक्सेलेंट. तो ये इतना आसान टेस्ट है, ये आइल्स रीडिंग के लिए पता नहीं ये बच्चे क्यों इतने ज्यादा परेशान रहते हैं. इट्स क्वाइट हैज फाउंड, क्योंकि यहाँ पे स्टडीज प्लूरल है, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड व्हाट? हैव. इन लोगों ने हैज इस्तेमाल किया है. तो हैज फाउंड उन लोगों ने क्या लिखा है? हैव शोन. अच्छा मजे की बात यह है कि आइल्स वाला सवाल में जो ग्रामर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसेज में भी वैसे के वैसे ग्रामर होगा. यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट, यहां पे पैसिव है, यहां पर भी पैसिव है, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है. कैन यू सी? यस सर। ओके. दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्पेसेस, उन लोगों ने क्या है? द एक्सेस टू, That access to even. या द एक्सेस टू व्हाट? Even the most even basic green yes, spaces. basic green spaces. ग्रीन स्पेसेस। Excellent. तो मतलब सही चल रहा है ना? Can Yes, sir. prevent. अच्छा अब मुझे ये बताइए, प्रिवेंट जो है ये हेड एंड निगेशन है कि नहीं? Yes, sir. Have. हमने पढ़ा था ना Yes, हेड एंड sir. निगेशन. जी Yes, sir. तो हेड एंड निगेट मतलब ये नेगेटिव है. अब नेगेटिव वर्ड इन लोगों ने क्या लिखा है वहां पर? Avoid. Can provide. एक्सेलेंट. अवॉइड. फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए इन लोगों ने क्या Yes. लिखा है? Dementia, sir. ये तो डिमेंशिया सफरर। ओके. अभी डिमेंशिया ओबेसिटी में सर, इसमें ये Obesity. मेडिकल टर्म है आप सर, लोग तो इसको आप लोग कैसे ये पता चलेगा? देखें, आप लोग ये करना है आप लोगों ने कि मुझे ये बताए कि ग्रीन स्पेसेस कैन प्रिवेंट फिजिकल प्रॉब्लम सच एज. तो मुझे बताए कि इसमें डिमेंशिया लिख दूं और कि ये मैं लिख दूं ओबेसिटी. आप बताएं मुझे. Obesity, sir. Dementia. Obesity. Dementia. डिमेंशिया क्यों ना लिखूं? ओबेसिटी। सर वो मेंटल से वेरी Dementia गुड. प्रॉब्लम है ना? सर एक्सेलेंट. डिमेंशिया मेंटल प्रॉब्लम है इस वजह से, क्योंकि हम पहले भी हमने इसके बारे में बात की ऊपर वाले पैराग्राफ में. Excellent. This is now mental problem. मतलब dementia, जी सर. those people they suffering from dementia means they forget things. और फिर यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखे, मेरी बात सुने, अगर आपको वहां से भी पता ना चले तो इन लोगों ने यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है. Have they used it? Because we have a No, negative sir. word, prevent. No. No, sir. और यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि दैट कैन नॉट बी द राइट आंसर. लेकिन यहाँ पे एंड हेल्प पीपल अवॉइड, तो यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं? और Yes, ओबेसिटी sir. जो है Yes, sir. फिजिकल है Yes, कि sir. नहीं? It has. एंड फिजिकल Yes, प्रॉब्लम, sir. ये Yes, फिजिकल sir. प्रॉब्लम की एग्जांपल है. सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट स्ट्रेट अवे द राइट आंसर कैन बी ओबेसिटी. obesity. Obesity. अच्छा इसमें आप लोगों ने क्या करना है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है सही पैराग्राफ फाइंड करना, ये इंपॉर्टेंट है. Okay, we had 4 questions and okay, we have corrected them.
So what you can do, yeah, the first one is energy, and then food and gardening and obesity. Okay. आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपने सही पैराग्राफ फाइंड आउट करना है। सही पैराग्राफ फाइंड करके फिर आप जवाब आसानी से पैदा कर सकते हो। और जो स्ट्रेटजीज मैंने बताए थे वही स्ट्रेटजी आप लोगों ने अप्लाई करना है। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये दिमाग का गेम है, ये कंप्रहेंशन है, रीडिंग कंप्रहेंशन है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो बच्चा तेज होगा, जो बच्चा एक चीज को कंप्रहेंड कर पाएगा, जो अंडरस्टैंड कर सकता है, वही बंदा विनर होगा। इसमें अगर आप सिर्फ आंखों से चीजों को देख के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो यू कैन नेवर रीच टू द करेक्ट आंसर। व्हाट कैन रीच यू टू द करेक्ट आंसर? योर माइंड, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, कि आप यस सर। चीजों को अंडरस्टैंड करें, आप सोचे कि कैसे, क्यों। और हमेशा याद रखें कि फुल आपने क्या करना है, वो फुल जहां से मतलब ब्लैंक से पहले ब्लैंक के बाद मुकम्मल पैराफ्रेजिंग आपने करना होता है, हाफ पैराफ्रेजिंग नहीं, फुल मुकम्मल पैरा। ये अभी मैं जो आप लोग के साथ कर रहा था ना, तो इसीलिए कर रहा था ताकि आप थोड़ा बेहतर समझे कि जी मैंने इस तरीके से हर एक वर्ड को पैराफ्रेज करना है। अगर आधा हिस्सा, सवाल का आधा हिस्सा तो सही वहां पे पैराफ्रेज पैराग्राफ में हो रहा है, लेकिन आधा हिस्सा बिल्कुल पैराफ्रेज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यू आर मिसिंग समथिंग एंड दैट लोकेशन इज नॉट द राइट प्लेस। सही जवाब के लिए हमेशा याद रखिए कि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर वन, लोकेशन, की जगह ठीक हो, लोकेशन ठीक होना चाहिए। गलत जगह है तो आपका जवाब गलत होगा। लोकेशन ठीक। नंबर टू, ग्रामर ठीक, कि ग्रामर ठीक हो। एंड नंबर थर्ड, मीनिंग। कभी कभार लोकेशन और ग्रामर तो आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन मीनिंग गलत आ रहा है, या मतलब मीनिंग ठीक आ रहा है लेकिन वहां से लोकेशन गलत है। तो इन तीनों को सही करना, ठीक है। इफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर करेक्ट, देन इसका मतलब है कि आपने सही जवाब फाइंड आउट कर दिया। लेकिन इन तीनों में एक भी चीज मिसिंग हो, सो देन यू हैव मेड अ मिस्टेक। देन इज दिस क्लियर?